So let's start with the phycobilins. Phycobilins, they are present in red algae. तो रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए, डी एंड along with that phycobilins are present. Now the three types of the phycobilins are there, that is allophycocyanin, phycocyanin and phycoerythrin. इसमें से ये जो दो पिगमेंट्स हैं दीज आर ब्लू इन कलर और ये जो पिगमेंट है दिस इज रेड इन कलर. इट इज क्वाइट सिंपल दैट इन द रेड एल्गी द कंसंट्रेशन ऑफ द फाइकोएरिथ्रिन इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज रेड इन कलर. ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है इन पिगमेंट्स के बारे में पहला फीचर दैट दीज पिगमेंट्स दे हैव 4 pyrrole rings. Just like the chlorophyll, the 4 pyrrole rings, they are present, and these 4 pyrrole rings, they are again connected. They are again connecting, resulting in the formation of a chain-like structure. तो क्लोरोफिल ए के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ये जो 4 पायरोल रिंग है इंटरकनेक्टेड है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोज्ड टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर. पर यहां पर अब कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? ओपन टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर. Open tetrapyral structure. Now another thing which is different from the chlorophyll, that magnesium is absent. Along with the magnesium, tail is absent, and these pigments, they are water soluble and heat labile. Now these phycobilins, these pigments, these phycobilins, they join with protein. Yes, they show the conjugation with protein which results in the formation of phycobiliproteins. Right? Now these phycobiliproteins, they will aggregate, they will form a group over the thylakoid membrane. Let's say this is thylakoid. Yes, this is thylakoid membrane. Thylakoid membrane के ऊपर ये phycobilin protein like this. These are phycobiliprotein. You can see here the phycobiliprotein, they are forming this complex. तो आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स सा फॉर्म हो रहा है. दिस कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड ओवर द thylakoid membrane, that is known as phycobilisome. Right? Now what is the function of these pigments? Now the first function associated with these pigments, they are going to work like helping pigments. They will work like accessory pigments, that they will absorb light energy and transfer it to the main pigment, that is chlorophyll A. तो देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया है? फाइकोबिलिसोम. और यहां पर मैं ये बना रही हूं क्लोरोफिल ए. ये रहा क्लोरोफिल ए. राइट? तो ये क्या बनाया है? फाइकोबिलिसोम. एंड दिस इज क्लोरोफिल ए. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पिगमेंट्स? दे विल एब्सॉर्ब लाइट एनर्जी. यस, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे. एब्सॉर्ब करने के बाद किसको ट्रांसफर कर देंगे? दे विल ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल ए, विच विल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी.
This is first function. Second one, that these pigments, they are associated with one phenomena, that is the Gaidukov phenomena. So they are associated with the Gaidukov phenomena, which is also known as complementary chromatic adaptation. And this adaptation I had already discussed in bacteria while discussing the bacteria. Now these pigments, phycobilins, one, they are present in red algae, and along with that, these pigments, they are also associated with prokaryotic algae, that is BGA, that is blue-green algae, also known as cyanobacteria. Now these pigments, they can be easily separated with the help of paper chromatography. Yes, let's see how on the paper chromatography these pigments can be identified on the basis of their color, solubility, as well as rate of diffusion. Now the pigments, they can be easily separated on paper chromatography. This is based upon the solubility and rate of diffusion. Means जितना molecular weight pigment का कम होगा उतनी ही उसकी movement chromatography paper के ऊपर faster होगी. So let's say this is a chromatographic paper which is showing separation of different photosynthetic pigments. तो सबसे ऊपर जो बैंड नजर आएगा that is of orange in color. Yes, सबसे ऊपर जो बैंड नजर आएगा that is orange in color, और ये जो orange बैंड यहां पर नजर आ रहा है that is of carotene. Right? So carotene, they are going to have highest position on the chromatographic paper. It means their molecular weight is less. अब इसके नीचे आपको नजर आएगा yellow color का band. Yes, below this, what you will see, the yellow color band is there. This yellow color band is represented by xanthophylls. क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अभी मैंने यहां पर बताया क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 893 एंड फॉर द क्लोरोफिल बी दैट इज 903. तो इट मींस क्लोरोफिल ए और बी को पोजीशन करना है. तो हायर पोजीशन किसकी होगी? दैट इज क्लोरोफिल ए बिकॉज द मॉलिक्यूलर वेट इज लेसर. सो दिस इज क्लोरोफिल ए. The band will appear for the chlorophyll A and this is bluish green in color. Right, and below this, now the band is for the chlorophyll B, that is yellowish green in color. Right, so orange color band is for carotene, yellow one xanthophyll, bluish green chlorophyll A, and the yellowish green is for the chlorophyll B. So this was about the structure of the different pigments. Now here I will be discussing what is the different wavelength of lights which are absorbed by these pigments. For understanding this, now I will be dealing with the absorption spectrum. So let's start with the absorption spectrum. Now absorption spectrum, it is a graphical representation of degree and portion of wavelength of light which is absorbed by a particular substance, and in this case we are talking about the photosynthetic pigments. Means photosynthetic pigments है वो कौन कौन सी wavelength of light absorb करेंगे. So it is a graph representing degree, that is
amount and portion of wavelength of light absorbed by the pigment. Now, in this case, I would like to add one point that the absorption spectrum, yes, this graphical representation, it is fingerprint of a substance. Fingerprint means that this absorption spectrum, it helps in the identification of substance, it helps in the identification of the photosynthetic pigments. Now here I will be telling you some important points with respect to the absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids. Yes, on this side of the axis, I am showing wavelength of light in nanometer. And here, degree of absorption. First of all, I will be telling you about the chlorophyll A. So this is absorption spectrum for the chlorophyll A. So you can see here that in the chlorophyll A, there is absorption maxima in the blue region as well as in the red region, and in the blue region the absorption maxima is at 435 nanometer and in the red region it is at 673 nanometer. अब ये जो chlorophyll A है, this is of several types and different types of the chlorophyll A, they show the different absorption maxima in the red region. So like chlorophyll A can show absorption maxima in the region 683, absorption maxima at 683, then it can be at 703 nanometer. So this was about the chlorophyll A. Now let's see what is the scenario with respect to the chlorophyll B. Chlorophyll B will also show the absorption in the blue region. As well as also the absorption is shown in the red region. Right? Now in the blue region the absorption is there at 453 nanometer, absorption maxima is there, and in the red region the absorption maxima is there at 642 nanometer. So this is the absorption spectrum for the chlorophyll B. So now let's see what is the scenario for the carotenoids. Yes, so this one is representing the absorption spectrum for the carotenoids.
सो यू कैन सी हियर कि कैरोटिनॉइड्स यहां पर इस एरिया में दो जगह एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शो कर रहे हैं. वन इज एट दी 449 नैनोमीटर and the another one is at 478 nanometer, right? So if you compare chlorophyll A and chlorophyll B, chlorophyll A और chlorophyll B को compare करेंगे. If you compare chlorophyll A and chlorophyll B, you can see here that chlorophyll B, it shows more absorption in blue region, and the chlorophyll A, it shows more absorption in the red region. पर दोनों के दोनों ब्लू और अगर रेड को कंपेयर करें तो कहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं? ब्लू रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम हियर. एक्शन स्पेक्ट्रम. अब जो पिगमेंट्स है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अब इस वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इन पिगमेंट्स ने क्या एक्शन करना है? द एक्शन हियर इज फोटोसिंथेसिस. So what is action spectrum? It is graph representing the effectiveness of the different wavelength of light to perform our action, to perform our function. And in this case, what is that function? That function is photosynthesis, that represents action spectrum. So it is a graph depicting effectiveness of different wavelength of light. To perform action. And what is the action in this case? In this case, the action is photosynthesis. तो मीन्स अब हमने यहां पर समझना है कि कौन सी रीजन के अंदर किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा. Now for the first time the action spectrum of the photosynthesis, it was studied by the scientist Engelmann. और इस एक्शन स्पेक्ट्रम को फाइंड करने के लिए he used Spirogyra, green alga which is filamentous, as well as Cladophora, green alga, filamentous green alga, and oxygen loving bacteria. Yes, तो यहां पर यूज करा green alga और oxygen loving bacteria. So let's say this is filamentous green alga. Yes, this is filamentous green alga. Now what Engelmann did, with the help of a prism की हेल्प से उसने सनलाइट को रेनबो ऑफ डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड करा. सो विद द हेल्प ऑफ द प्रिज्म ही डिवाइडेड द सनलाइट इनटू द रेनबो ऑफ डिफरेंट कलर्स, दैट इज violet, blue, green, yellow, orange and red. Yes, तो सनलाइट को डिवाइड करा विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म और हर एक रीजन के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिटरमाइन करा. You can see here this different wavelength of the light. It is made to fall upon the Spirogyra. अब जब Spirogyra इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, it will show the photosynthetic activity. तो हर एक रीजन के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को मेजर करा गया. अब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को कैसे मेजर करा जाएगा? You know that during the photosynthesis, the plants, they release one byproduct, that is oxygen. So it is quite simple. जितना photosynthesis ज़्यादा होगा, उतना ही oxygen release ज़्यादा है. So it means
कितना फोटोसिंथेसिस हुआ उसको फाइंड करने के लिए जो पैरामीटर यूज करा गया दैट इज ऑक्सीजन रिलीज, और कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसको फाइंड करने के लिए यूज करा गया ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। मींस कि जहां पर ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा होगा, जिस वेवलेंथ के ऊपर, जिस रीजन के ऊपर ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा होगा वहां पर इस बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। इट वाज ऑब्जर्व्ड that the bacteria has shown accumulation blue region के अंदर accumulation है, and the another the bacteria has shown the accumulation in the red region। तो ये मैं यहां पर बैक्टीरिया दिखा रही हूं ऑक्सीजन लविंग। तो ऑक्सीजन कहां पर ज्यादा हुई है रिलीज? ब्लू रीजन के अंदर और रेड रीजन के अंदर रिलीज हुई है। तो इट मींस जो ब्लू और रेड रीजन है यहां पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ज्यादा एज कंपेयर टू दी अदर रीजन्स, एज कंपेयर टू दी अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस इज हाउ Engelmann gave the action spectrum of photosynthesis. Yes, this is action spectrum. What is that? कि जब पिगमेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, अब होगा एक्शन फोटोसिंथेसिस। और कौन से रीजन के अंदर एक्शन ज्यादा है? It was observed that the maximum rate of photosynthesis was there in the blue region and in the red region. So this is how the action spectrum of the photosynthesis was obtained. Now, till the time the action spectrum of the photosynthesis was obtained, it was not known that which is the chief pigment involved in the photosynthesis. जब तक ये एक्शन स्पेक्ट्रम फाइंड करा गया, इट वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड, इट वॉज नॉट फाउंड कि कौन सा वो चीफ पिगमेंट है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, कौन सा वो चीफ पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी के अंदर। Then what was done? ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है इसको कंपेयर करा गया with the absorption spectrum of different pigments. Yes, this graph, it was compared with the absorption spectrum of different pigments and it was observed कि जहां पर क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है वहीं पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। Yes, तो जहां पर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन शो करता है वहीं पर सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, which confirmed that the chief pigment which is involved in the photosynthesis, that is chlorophyll A. So you got this? So the action spectrum and the absorption spectrum, they were compared, and after the comparison it was observed that the chief pigment which is involved in the photosynthetic activity, that is chlorophyll A, which will absorb light energy and convert it into the chemical energy. So after dealing with the action spectrum, now I will be dealing with the experiments which were performed by the Emerson. So now let's study Emerson experiment. Emerson studied effect of monochromatic wavelength of light, different wavelength of light on the unicellular green alga, that is chlorella. He studied effect of monochromatic light of different wavelength on photosynthetic activity in chlorella. Right? Now what he observed that after 680 nanometer
680 नैनोमीटर के बाद अगर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट दी गई, मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो दिस हैज रिजल्टेड इन द शार्प डिक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. So after the 680 nanometer of wavelength of light, it was observed there was sharp decrease in the rate of photosynthetic activity. So sharp decrease was there in the photosynthetic activity after 680 nanometer. This what he called it as? He called this as red drop, because this decrease was there in the far red region. That's why he called this as red drop. Then later what he did, Emerson, in the chlorella only, he studied rate of photosynthesis, photosynthetic yield, one at the short wavelength of monochromatic light, that is between 650 to 680 नैनोमीटर. तो ये 650 टू 680 ये जो मोनोक्रोमैटिक रेंज है, इसके ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाइंड करा. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस दैट वाज lesser photosynthesis was there. Then the another monochromatic range he took, that is 700 to 720 नैनोमीटर. और इस रेंज के अंदर भी उसने क्या देखा कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लेस है. तो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी फोटोसिंथेसिस कम है, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है. देन व्हाट ही डिड, he supplied both of these lights simultaneously to the chlorella, and there was 25% increase in the rate of photosynthesis. तो जब शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेंज उसने इकट्ठी सप्लाई करी क्लोरेला को, देयर वाज 25% इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज इमर्सन इफेक्ट, or it is also known as enhancement effect. Right? Now, what was the conclusion of Emerson after this experiment? Now, what he concluded कि short wavelength पर rate of photosynthesis कम है, सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ दे रहे तब भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है, और जब दोनों को साइमल्टेनियसली दे रहे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है. फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड कि प्लांट्स के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ two photosystem. For photosystem I am writing PS. Photosystem means group of pigments which are involved in the photosynthesis. दो photosystem है. एक फोटोसिस्टम जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट पर एक्टिवेट होता है, एंड दैट फोटोसिस्टम इज फोटोसिस्टम 1. यस, दिस इज फोटोसिस्टम 1. और एक जो फोटोसिस्टम है वो शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट पर एक्टिवेट होता है, एंड दैट इज फोटोसिस्टम 2. So now you please keep this in mind that after this experiment, what was the conclusion? That in the plants there is presence of two photosystem, but as compared to the bacteria, yes, if we compare this with the bacteria, that in the bacteria only there is presence of one photosystem. सिर्फ एक फोटोसिस्टम है, except one bacteria, that is BGA. Yes, BGA. In the BGA again there is presence of two photosystem. तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, सारे प्लांट्स में two photosystem है and one bacterial group where the two photosystem they are present, that is BGA is there. So this is okay. So this was about the raw material of the photosynthesis. Along with that, here then it was put forward by the experiments of the Emerson that in the plants two photosystems they are involved. Now in the next class I will be starting with the structure of photosystem, and along with that we will be dealing with the light reaction. Thank you so much.